15 years back, we decided that we must do something to revive the glory of Murshidabad. So we formed an organization called Murshidabad Heritage Development Society. For the last 10 years, I am the president. We tried to promote Murshidabad, and fortunately, Darshan Dudodia decided to restore his ancestral property, which he was at one point thinking of demolishing. And thankfully, this property has become very popular. He's charging 19,000 rupees plus taxes, 22,000 rupees per person per night. If a couple goes, he has to pay 44,000 rupees per night. Yesterday, it was a weekday. The property was full, which means we have people who can pay 44,000 rupees, booking one room during a weekday, not weekends. So again, I always wanted, when I started iLead, our first educational trip, we have that time only 26 students. Our first educational tour happens with Murshidabad, visit to Murshidabad. On the way to Murshidabad, we visited 4 towns which we can say as Europe on Ganges. Shrirampur, which was Danish colony, Chinsura, which was Dutch colony, Chandanagar, which was a French colony, and Bandel, which was Portuguese colony. So we took our students to all these 4 unique towns, and then we took them to Murshidabad. And our only problem was that there was no place to stay. It was a very bad place to stay. Somehow we managed to stay in some people's house, which has no proper bathroom. So that was a big challenge. After that, we never ventured to go to Murshidabad till such time that some hotels came in Berhampur, and then we put our students to Berhampur. One youth hostel was there, but that had stinking bathrooms and all that. My students were not happy. So then I thought that, and then now a new education policy talk about experiential learning. So experiential learning means, and Modi has started Dekho Apna Desh. So we thought we must do something about this crowd, students. So initially I thought I will start a property which is basically dormitories come rooms. The whole design was done by me. Incidentally, there's no architect. I'm the architect. There's no interior designer. I'm the interior designer. So we thought because of my experience with PS, dealing with so many architects, I can easily design a building. There's no problem. So we thought we'll make it. But as we progressed, I thought I must add value so that the experience of the students who are staying there will be very educative in addition to be entertaining. So I had been collecting artifacts and, I don't know whether you know, I have got 4 vintage cars which I have restored from. सबसे पहले ईस्टर्न इंडिया में हमने एक हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टी अभी डेवलप होकर तैयार हो गई है जिसका नाम है हाउस ऑफ शेहरवाली। ये प्रथम बार हो रहा है कि एक म्यूज़ियम होटल हमारे ईस्टर्न इंडिया में हो रहा है। म्यूज़ियम होटल वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। लोगों एक तो टैरिफ बहुत ज़्यादा है, लोग लाइन लगा के वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन म्यूज़ियम होटल हिंदुस्तान में अभी बहुत गिने चुने हैं। एक कोचीन में है, एक राजस्थान में है, एक आध और कोई है, लेकिन ईस्टर्न इंडिया में तो कोई म्यूज़ियम होटल है। ये प्रथम बार हो रहा है कि एक म्यूज़ियम होटल यहाँ खुला है। अब ये म्यूज़ियम होटल जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो 400 बरस पहले मुर्शिदाबाद में जिनका वर्चस्व था और एक ज़माने में उनकी धन संपदा इतनी थी कि वो यूरोपियन रॉयल्टी से भी ज़्यादा थी। उन्होंने ऐसे ऐसे मकान बनाए थे जो बकिंगम पैलेस और टावर ऑफ लंदन से भी बहुत ग्रैंड थे। उनके रहने सहने का जो सिस्टम था वो भी बहुत राजाओं से भी बढ़ के था, लेकिन लोग भूल गए। और मुर्शिदाबाद एक समय में वर्ल्ड के जीडीपी का 5% कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन अब वो एक गोस्ट टाउन सा हो गया है। लेकिन वहाँ पे
हिस्टोरिकल और हिस्ट्री की इतनी चीज़ें हैं। कलकत्ते के एकदम पास है, 4 घंटे की ड्राइव है और आप ट्रेन में भी 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। लेकिन हमने उसको, उस पोटेंशियल को अभी तक टैप नहीं किया। अभी एक वहाँ पे बड़ी कोठी बनी है जिमगंज में, जिसके कारण लोगों का फुटफॉल बढ़ा है। लेकिन बड़ी कोठी में सिर्फ 36 जन रह सकते हैं और बहुत महंगी है। एक आदमी का चार्जेस है 19,000 रुपया पर नाइट पर पर्सन। वो लोगों की अफोर्डेबिलिटी बाहर है। उसकी हिस्ट्री, हेरिटेज, कल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसके बारे में जानकारी आपको हासिल होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे स्टूडेंट्स जाके इस तरह के होटल में एक्सपीरियंस करें। लेकिन स्टूडेंट्स को 19,000 रुपया दे नहीं सकते। तो हमारे होटल में हमने डॉर्मेट्रीज बनाई है और रूम भी है जहाँ पर फैकल्टी रह सके। और हमारा रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपया पर नाइट पर पर्सन है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट।